So we were started with the pharmacology of drug acting on ANS, autonomic nervous system, and we have seen some parts. We have seen the nervous system, their classification. We have seen the different actions of sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system. We have seen the synthesis, storage, release of your acetylcholine. Then after that, we have seen the synthesis, storage, release of adrenaline, noradrenaline. To that, we have seen the receptor, sympathetic receptor. If you don't know, I would like to explain you again. So just remember the location because a lot of times they used to ask question on this. So there are two types of receptor for sympathetic nervous system. Sympathy means when you are under the threat. So at that time there is a release of noradrenaline from your autonomic nerve ending, particularly sympathetic nerve ending, and it will act on its receptor, alpha and beta receptor. So there are basically two type of receptor, alpha receptor and beta receptor. Both these are nothing but the G protein coupled receptor. They are the category of G protein coupled receptor. Right? So in this alpha you have two subtypes, alpha 1 and alpha 2. So alpha 1 where it is located? It is located on the alpha 1 also has a subtypes. So alpha 1D which is located in the prosthetic urethra or prosthetic gland. Okay, and it is also present in the eyes. Okay, so in the prostate gland, alpha 1 receptor, particularly alpha 1A. That's why there is one agonist of this. Sorry, antagonist of this. So antagonist is there known as a tamsulosin. Tamsulosin is a drug of choice in the prostatic cancer, or you can say benign prostate hyperplasia, because it blocks the alpha 1A subtype of your alpha receptor. तो alpha 1A को block करने वाला drug होता है tamsulosin. So that is present in the eyes. Sorry, that is present in the prostatic gland. So prostate gland में होता है आपका tamsulosin. वहाँ पे alpha 1A receptor होता है. उसका उसका antagonist कौन है? Tamsulosin. So alpha 1A also present in the eyes. So alpha 1A blockers they are used in the treatment of glaucoma. Alpha 1A glaucoma में भी use करते हैं. Then alpha 1B 1D subtype of alpha 1 receptor. जैसे alpha receptor के subtypes होते हैं alpha 1 alpha 2. जैसे alpha 1 के भी subtypes होते हैं alpha 1A present in the prostatic urethra or prostate gland. And antagonist of that tamsulosin is used in the benign prostate hyperplasia. It is a drug of choice in the BPH. In the eyes, anti or you can say alpha 1A receptor blockers they are used in treatment of glaucoma. Okay. Alpha 1B 1D is present in the blood vessels, so it is a vasoconstrictor. You know that. जैसे मैंने alpha 1 के बारे में बोला था, so it is a nowadays it is a alpha 1B 1D. Likewise, the alpha 2 receptors they are there. So in the presynaptic, they act as a regulator for the sympathetic system. So presynaptic alpha 2 receptor it controls the release of noradrenaline. Post-synaptic alpha 2 receptor, so they are present in the blood vessel. Which kind of blood vessel? Skeletal blood vessel. We have seen, and it is also present in the brain. Beta 1, beta 2, beta 3. So remember, beta 1 receptor is present in the heart as well as juxtaglomerular cells of kidney. So stimulation of beta 1 receptor by heart in the heart increases the heart rate and force of contraction, positive inotropic effect, positive chronotropic effect. And stimulation of beta 1 in the kidney, that is JG cell, juxtaglomerular cells, it activates the renin, angiotensin, aldosterone system. Okay? So which will also try to increase your blood pressure. Basically, beta 1 receptor by its direct action on heart increases the force of contraction at a heart rate, which increases the cardiac output, lastly blood pressure. And also beta 1 stimulation in the kidney also releases the renin angiotensin system, activate that system. So there is a release of renin. Renin will convert inactive glycoprotein present in blood known as a angiotensin. That is converted into angiotensin 1. 1 will be converted into 2 by angiotensin converting enzyme. Angiotensin second is a vasopressor, it constricts the blood vessel. Again, it will increase the peripheral resistance and lastly blood pressure. Angiotensin second is converted to angiotensin 3. So angiotensin second acts on its receptor, angiotensin receptor. Also angiotensin second also stimulate the aldosterone, so which will lastly
increase the volume of blood by retention of sodium and water. That we'll see in the blood pressure. Okay. Remember in the bronchi, beta 2 receptors, GIT, bladder, uterus, skeletal muscle, okay, liver and blood vessels. Beta 3 is present in the adipose tissue, coronary vessels and urinary bladder. We have already seen this. We have already seen the actions of various actions of adrenergic nervous system. We have seen the again we have seen the receptors also in the details. We have seen classification. Okay, we have seen the classification also. We have seen the pharmacological actions of adrenaline and noradrenaline in the last lecture. We have seen the nasal decongestant. Okay, we have seen this catecholamines last time, non-catecholamines. In that you have ephedrine. In the last lecture yesterday, I was explaining this non-catecholamines. So I have already finished this ephedrine. Next part today we'll see this amphetamine. So you know that adrenergic drugs, they are classified into two types. First one is known as direct acting and second one is known as indirect acting. So direct acting drug, what they do? They either increases the activity of noradrenaline by stimulating the receptor. So basically they interact with the receptor or they themselves act as a precursor for the noradrenaline. So they are the direct acting drug. Now indirect acting drug, they will not act as an agonist to the alpha receptor or beta receptor, but they will cause the release of noradrenaline by another way, or okay, they enhances the release or they decreases their metabolism. So that's why they are known as a indirect acting. So first drug is amphetamine. Amphetamine क्या होता है? It is a drug of abuse. इसका आपको लत लगता है. Drug of abuse, amphetamine. Okay? So structure उसका it is similar to the ephedrine. Structurally it is similar to ephedrine. Available as a racemic mixture. Racemic mixture मतलब क्या? कि अगर दो इनैंशियोमर है, जैसे आपको वार्फेरिन आर एंड एस है ना, जैसे आपका थैलिडोमाइड आर एंड एस. So as like that, amphetamine is also there. So it is a racemic mixture of dextroform and levoform. Okay. So out of that dextroform, D-isomer is a 3 to 4 times more potent than L-isomer. इसका डेक्स्ट्रो आइसोमर जो होता है वो ज़्यादा पोटेंट होता है, 3 to 4 times more potent than L-isomer. Now for central effect, तो डी आइसोमर जो है ना वो सेंट्रल इफेक्ट के लिए 3 to 4 times ज़्यादा पोटेंट है देन एल आइसोमर. लीवो आइसोमर इज मोर पोटेंट देन डेक्स्ट्रो फॉर कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट. कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट के लिए लीवो आइसोमर ज़्यादा एक्टिव है. डी आइसोमर इज 3 to 4 times पोटेंट फॉर सेंट्रल इफेक्ट है ना, सेंट्रल मतलब सीएनएस के ऊपर स्टिमुलेंट वगैरह जो एक्शन है. लीवो आइसोमर इज मोर पोटेंट देन डेक्स्ट्रो फॉर कार्डियोवास्कुलर. इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा? सो ऑब्वियसली ये क्या है? सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है. तो इसका एक्शन क्या होगा? जैसे नॉर एड्रेनालिन का इफेक्ट है, जैसे नॉर एड्रेनालिन आपका वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है पेरिफेरल, नॉर एड्रेनालिन आपको हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नॉर एड्रेनालिन जेनेटिक का पेरिस्टासिस कम करता है, नॉर एड्रेनालिन यूरिनरी पेरिस्टासिस कम करता है. सो नॉर एड्रेनालिन स्वेटिंग बढ़ाता है, नॉर एड्रेनालिन कीमोटॉक्सिस को इनहिबिट करता है. So same thing will be done by amphetamine. So pharmacological actions. So it is a potent CNS stimulant. Potent CNS stimulant. It acts by releasing the biogenic amine. मतलब क्या? So catecholamines or monoamines or biogenic amines. These are the same terms. Catecholamines and biogenic amines and monoamines. Okay, they are known as the same terms. Catecholamines, biogenic amines, and monoamines. Like noradrenaline, adrenaline, dopamine. All they are known as catecholamines or biogenic amines. So this amphetamine releases the catecholamines from their storage site. मतलब क्या vesicle. So they release the more catecholamines from the vesicles from noradrenergic neuron. And in the large doses, it can also release the dopamine. And because of the release of dopamine, it can produce psychosis. Okay? Because of the release of dopamine, it can produce psychic effects. Psychic effect of mental and physical activity. It will increase like euphoria. It will cause euphoria. Euphoria means false feeling of well-being. Insomnia. Insomnia मतलब नींद नहीं आने का. Then psychic effect. It is analeptic. Analeptic मतलब क्या? Analeptic means what? Anybody? Yes. What do you mean by analeptic? I already told you. So analeptic means CNS stimulant.
CNS stimulant, they are also known as a analeptic. Analeptic means, okay, these are the drug, they stimulate the CNS. Okay, analeptic means, so to wake up who have been cast down. I have already told you, but you are not remembering this. एनालिटिक मतलब क्या है? जो डिप्रेस है, जो सो चुका है, उसको वेकअप करना, अवेकिंग. ओके, एनालिटिक. On the cardiovascular system, okay, obviously it will increase both systolic as well as diastolic blood pressure as that of the noradrenaline. स्मूथ मसल के ऊपर क्या करेगा ये? It contract the sphincter of bladder and releases the bronchial smooth muscle. So it contracts the sphincter of the bladder, relaxes the smooth muscle, okay, enlarges. So it causes urinary retention. Bronchial smooth muscle also relaxed as like of your noradrenaline. It is a appetite suppression. ये appetite को suppress करता है, मतलब ये भूख नहीं लगने देगा. Appetite suppression. याद रखना, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. Then adverse reaction क्या है इसके? It will cause palpitation, restlessness, headache, CNS stimulation, visual hallucination, मतलब आपको भगवान दिखाई देगा, misperception, psychosis. आप चल रहे हैं, आपको लग रहा है आपका कोई पीछा कर रहा है, कोई नहीं है लेकिन लग रहा है, misperception, visual hallucination, आपको भगवान दिखाई देगा, visual hallucination. These are the adverse effect of your amphetamine. तो यूज क्या रहेगा इसका? व्हाट विल बी द यूज? ऑब्वियसली थेरेपेटिक यूज. तो ADHD मतलब क्या? अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. मोस्टली दिस डिसऑर्डर इज कॉमनली फाउंड इन द चिल्ड्रंस. जो बच्चे होते हैं उनमें ये डिसीज होता है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी. मतलब वो क्या है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते और बहुत ही ज़्यादा वो एक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाइपर होते हैं. Then narcolepsy. Narcolepsy means daytime sedation. I told you. And obesity. It is used in the obesity, but it is not recommended to be used in the obesity. क्यों? Because it is addict. It has a addicting properties. ये जल्दी abuse कर रहा होता है. एक बार खा लिया तो लत लग जाती है. Now, non-catecholamines as a vasopressor. Non-catecholamines as a vasopressor. They are not employed by parental route. Injectably इसको यूज नहीं करते. They are employed by parental route form. They are used injectably by injectable route to correct the hypotension. अगर आपको ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ये क्या करेंगे? ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे. They are used to correct the hypotension due to cardiogenic shock and prevent and to treat the hypotension due to neurogenic shock. यहाँ पे हाइपोटेंशन जब होगा, मतलब ब्लड प्रेशर जब आपका कम हो जाएगा ड्यू टू आइदर कार्डियोजेनिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक. नर्व को अगर कोई इंजरी होता है तो न्यूरोजेनिक शॉक होगा. अगर आपको हार्ट में कोई इश्यू है तो कार्डियोजेनिक शॉक होगा. सो दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इन द न्यूरोजेनिक as well as cardiogenic shock. Am I audible to you? Again, to correct the cardiac arrhythmia. अरिथमिया, देखो ए रिथमिया मतलब क्या? जो कार्डियक, जो हार्ट का रिदम होता है. रिदम क्या है भाई? आपका हार्ट का, आपका दिल कितने टाइम धड़कना चाहिए? आपका दिल 1 मिनट में 70 बीट्स और अराउंड 72 बीट्स धड़कना चाहिए, है ना? तो आप बोलते हो वैसे मेरा दिल सिर्फ तेरे लिए धड़कता है, 2 मिनट के लिए बंद कर दे. 2 मिनट के लिए बंद करके कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. टू करेक्ट द कार्डियक अरिथमिया. तो अगर आपका हार्ट बीट ज्यादा है कम है than the normal range known as arrhythmia. What is the normal rhythm? 70 to 72 beats per minute. That is the normal rhythm. So if your heart is beating by 100, 112, 150, that is a rhythm. Disturbance, cardiac arrhythmia associated with the hypertension. बहुत ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर आपको, आप अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, तो if you are having a blood pressure for a longer time, so there may be chances of getting arrhythmia. Also used in the treatment of paroxysmal arterial tachycardia. Tachy means increased heart rate. Okay? तो इसमें आता है आपका नॉन क्रिटिकल अमाउंट में पहला है मेट्रामेनॉल. So it increases the blood pressure mainly by its peripheral vasoconstriction. पेरिफेरल ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा और पेरिफेरल रेशन बढ़ाएगा ताकि ब्लड प्रेशर बढ़े.
It has a long duration of action and less potent than adrenaline. तो potency adrenaline से कम होता है. It increases the force of contraction and cardiac output. Cardiac output भी बढ़ाता है, force of contraction भी बढ़ाता है. Peripheral resistance increase करता है ताकि blood pressure increase हो. Next आता है mepenteramine. Okay, mepenteramine. It is a directly as well as indirectly acting. It acts by releasing the noradrenaline. Actions are similar to epinephrine. It causes the CNS stimulation. ज़्यादा कुछ increase इसमें है नहीं. तो आपको पता चल रहा है कि क्या करने का. Then phenylephrine. So it is a potent selective alpha 1 receptor stimulant. So it is used in the nasal congestion as a nasal decongestant and mydriatic. Nasal decongestant किसमें यूज करते हैं अपन? इसमें अपन यूज करते हैं सर्दी में. So if you are suffering from common cold, nasal decongestants are used. And very interestingly, अभी जो एम्स का पेपर हुआ है दिल्ली में, so just अभी recently मुझे पेपर मिला है वो. So recently जो एम्स का पेपर हुआ है दिल्ली में, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था. So following symptomatic drug used as a decongestant acts via following receptor. और ऑप्शन में था अल्फा 1 एगोनिस्ट, अल्फा 1 एंटागोनिस्ट, बीटा 1 एगोनिस्ट, बीटा 2 एंटागोनिस्ट. अल्फा 1 एगोनिस्ट और वो क्या करते हैं वैसोप्रेसिन. तो बाय constricting the blood vessels of nasal mucosa, they release the congestion. ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होगा मतलब क्या कि परमेबिलिटी कम होगा, आपके नजल में सिक्रेशन कम होगा. सो दैट्स व्हाई दे एक्ट एज अ नजल डिकंस्टिंग. इसके ऊपर एम्स 2023 दिल्ली का पेपर अभी आज ही जो पेपर मिला है, पेपर कल ही हुआ है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन. मतलब हर एक लाइन जो बोल रहा हूँ मैं, हर एक इम्पोर्टेंट होता है, नॉट ओनली फॉर जीपैट, बाकी एग्जाम के लिए भी बहुत सारे हैं. वो पेपर का मैं देखते टाइम मिलता है तो एक वीडियो बना दूंगा यूट्यूब के लिए. देन नेक्स्ट आता है मिथोक्सामाइन. इज अ नॉन सिलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट, मतलब दोनों के लिए भी करता है एगोनिस्ट. इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ द प्योरली वैसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट. हाँ अभी वो एम्स में भी है ना, देखो वहां पे आ गए एक देश में, वहां पे आ गए एक अपना महाराष्ट्र का लड़का टॉपर एम्स में ना, फार्मासिस्ट का एग्जाम में अभी डाल दिया अलग ही फटाक से वीडियो. ऐसा कहाँ से पकड़ लेते हैं क्या मालूम. जैसे होता है ना, अगर कुत्ता है बिल्ली है ना, कुत्ता बिल्ली अगर कोई, देखो आप कुत्ता या बिल्ली ने कोई अगर मीट देख ले, मीट ना, कुत्र्याने किंवा मांजरने एखादं मटणाचा खडा किंवा हाडूक दिसलं ते असं पटकन त्याच्यावर पडतं. तसं हे काय करतात लोक क्लासेसवाले, फटाक से उसको पकड़ लेंगे, पैसा पैसा देके जो भी देना है वो ट्रॉफी भी वो दे, लेकिन इंटरव्यू मतलब यार, मतलब मैं तो हैंग हो जाता हूँ यार, इतना इतना फास्ट कैसे कर लेते है ना. मतलब ग्रुप में भी आला है, लेकिन ग्रुप मध्ये पण आला ते, ग्रुप में भी आ गया. मैंने फिर नीचे एक मैसेज डाल दिया, फिर वो बाकी ग्रुप में नहीं आया कि उसको मालूम नहीं. और ऊपर लिखा है क्या, जैसे उस टाइम पे लिखा था उसने मारा आया इसने, किसान का बेटा बन गया टॉपर, ऐसे ये थोड़ा सा अलग लिखा है इसने. अभी यहाँ पे द ग्रेट मराठा. अबे तू है कौन, मराठा इधर है महाराष्ट्र में, उधर नहीं है छत्तीसगढ़ में. मतलब क्या क्या करेंगे हम जाने. नेक्स्ट आता है आपका मिसलेनियस कंपाउंड्स. इसमें आएगा आपका आइसोक्सीप्यूरिन. मिसलेनियस कंपाउंड में आएगा आइसोक्सीप्यूरिन. सो इट इज अ टोकोलाइटिक, याद रखना है टोकोलाइटिक. इट रिलेसेस द uterine smooth muscles. So it is a beta 2 receptor agonist as well as, okay, it will acts as a beta 2 receptor agonist by its direct action and has a potent inhibitory effect on the, okay, on the wall of uterus. So it is used in the treatment of dysmenorrhea, threatened abortion, premature labor and peripheral vascular disease and uterine smooth muscle relaxant. ये डिस्मेनोरिया मतलब क्या होता है कि abnormal bleeding due to within abnormal bleeding in the menstrual cycle, dysmenorrhea, threatened abortion, premature labor, peripheral vascular disease, वो ये टोकोलाइटिक होता है. नेक्स्ट आता है nasal decongestant. nasal decongestant used in the cold, common cold. So ephedrine hydrochloride, xylomethazoline, oxymethazoline, propylhexidrine, pseudoephedrine, phenylpropylamine maleate, and phenylephrine hydrochloride. So these are the drugs used in the nasal
used as a nasal decongestant along with the because of their vasopressor action. Atropic atropic rhinitis मतलब क्या है? Atropic rhinitis मतलब सर्दी. So also known as a rhinitis medicamentosa is the long term adverse effect of xylomethazoline. ये भी आता है कभी कोई क्वेश्चन. So atropic rhinitis is the adverse effect of xylomethazoline. And related drugs. Ephedrine is a vasopressor of choice in the pregnancy. Then selective alpha 2 beta 2 stimulant. They are discussed in the separate chapter. इसमें clonidine आता है, methyl dopa आता है. So they will discuss these two drugs in the drug used in the hypertension and hypertension drug. So they decreases basically sympathetic outflow and that's why they decreases the blood pressure. Whatever we have seen that is adrenergic drugs. Now sympathomimetic drugs, whatever we have seen that is sympathomimetic or adrenergic drug, that will show action similar to that will show action similar to noradrenaline. Now anti-adrenergic drug or sympatholytic drugs. Sympathomimetics means copy the responses produced by noradrenaline. Sympatholytic means those which will block the actions of noradrenaline. So you know that there are two receptors. उसके receptor होते हैं alpha and beta. Alpha alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2, beta 3. Sympatholytic drugs or adrenergic blockers. They block these receptors. Some drug will block alpha receptor, some drug will block beta receptor, beta 2. Beta 2 blockers are not used. है नहीं वो बस नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है बीटा 2 को ब्लॉक करते हैं एंड बीटा 3. So alpha blockers and beta blockers they are of interest. They are of therapeutic interest. Alpha blockers and beta blockers. So first नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स मतलब क्या भाई? नॉन सेलेक्टिव मतलब क्या? नॉन सेलेक्टिव मतलब they will block alpha alpha 1 as well as alpha 2. Non selective in action. Non selective alpha blockers. So in that you have different classes. First one is a haloalkylamines. Haloalkylamines है ना, मतलब chemically they are classified into three types. Haloalkylamines मतलब halogen होगा, alkyl group होगा, amines होगा. इसमें dibenamine and phenoxybenzamine. Dibenamine and phenoxybenzamine. Remember these are the examples of non-selective alpha blockers. Selective alpha blockers में जो आता है ना वो अलग आता है. नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स उसमें हेलो अल्कामाइड्स डायबेनामाइन एंड फिनोक्सिबेंजामाइन. when natural alkaloids all they are the ergot alkaloids. Then imidazoline derivative में आता है पेंटोलामाइन एंड टोलियाजोलिन तो इजीली समझ में आएगा. एजोलिन है ना, तो टोलियाजोलिन मतलब इमिडाजोलिन डेरिवेटिव पेंटोलामाइन एंड टोलियाजोलिन. सो दे आर द नॉन सिलेक्टिव. ये देखो इसके एग्जांपल जो है नॉन सिलेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट exerts its anti-hypertensive effect by selectively blocking the alpha 1 receptor. तो आपको ऑप्शन में आएंगे प्राजोसिन, टेराजोसिन, इंडोरामाइन, देन आपको आएगा फिनोक्सिबेंजामाइन. तो आपको तो कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि फिनोक्सिबेंजामाइन इसमें भी अमाइन है, इंडोरामाइन इसमें भी अमाइन है ना. और आपको ये तो मालूम है कि प्राजोसिन टेराजोसिन वो तो ब्लॉकर है, ये भी ब्लॉकर है. कंफ्यूजन होता है कि सिलेक्टिव कौन है नॉन सिलेक्टिव कौन है. नॉन सिलेक्टिव याद रखो आप डायबेनामाइन, फिनोक्सिबेंजामाइन, ergot alkaloids, imidazoline वाले पेंटोलामाइन एंड टोलियाजोलिन. नाउ सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर मतलब क्या है? ये सिर्फ अल्फा 1 को ब्लॉक करेंगे. अल्फा 1 कहाँ पे होता है? ब्लड वेसल में. क्या करता है? ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है. उसके बाद में क्या होगा? कंस्ट्रिक्शन होने के बाद में पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है. पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा भाई? बाहर तो नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा जो, ठीक है, बिकॉज इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. So that's why selective alpha 1 blockers they are useful in the treatment of hypertension, blood pressure. कौन है भाई? प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, इंडोरामाइन. उसमें और भी आता है टैमसुलोसिन, अल्पुजोसिन, all they are the selective alpha 1 blocker. Tamsulosin is a drug of choice in a benign prostate hyperplasia. Prazosin is a drug of choice in a scorpion sting. Prazosin is a drug of choice in a scorpion sting. Scorpion sting म्हणजे काय? बिच्छू. स्कॉर्पियो म्हणजे बिच्छू है ना, आप गाना गाते हो बिच्छू लड़ गए रे मेरे पीछे पड़ गए रे. वो जो बिच्छू है उसके काटने के बाद ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है? प्राजोसिन.
prazosin is a drug of choice in the scorpion sting. Then third category होता है selective alpha 2 blockers. Selective alpha 2 blockers में आता है yohimbine. So it is also obtained from one plant known as yohimbine. yohimbine नाम का एक प्लांट था, उससे याद अल्कलॉइड्स. ठीक है, और उससे एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स है ना, अल्फा ब्लॉकर्स है, बीटा नहीं, बीटा आगे आएंगे. क्लासिफिकेशन बहुत बार लेने वाले अपन, बिकॉज क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. सो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स और अल्फा ब्लॉकर्स, they may be classified into two types. So competitive and non-competitive. Competitive and non. So competitive is also known as the equilibrium type of alpha blockers. Non-competitive, they are also known as a non-equilibrium type of alpha blockers. Right? Now, in case of non-equilibrium or non-competitive, is a beta haloalkylamine. Haloalkylamines or beta haloalkylamines. Example is a phenoxybenzamine. As it is question आ चुका है इसको. Phenoxybenzamine belongs to following class of alpha blockers. It is a beta haloalkylamines. आपको याद रखना है. Then competitive antagonist और equilibrium type of antagonist. इसमें भी क्या है, टाइप से सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव, अल्फा 1 सिलेक्टिव, अल्फा 2 सिलेक्टिव. पहले देखेंगे अपन नॉन सिलेक्टिव. नॉन सिलेक्टिव में कौन होता है? नॉन सिलेक्टिव में आएगा अर्गोट अल्कोलॉइड्स, अर्गोमेट्रिन, अर्गोडोक्सिन. देन आएगा आपका हाइड्रोजनेटेड अर्गोट अल्कोलॉइड्स. तो इसमें हाइड्रोटर्म आएगा. ठीक है, तो अर्गोटामाइन, अर्गोडोक्सिन यही टर्म रहेंगे, बस क्या रहेंगे हाइड्रोटर्म. तो क्या है, डायहाइड्रो अर्गोटामाइन, देन डायहाइड्रो अर्गोडोक्सिन. इसमें डीहाइड्रोजनेटेड है तो डायहाइड्रोटर्म आएगा, डायहाइड्रो अर्गोटामाइन, डायहाइड्रो अर्गोडोक्सिन. ठीक है, देन इमिडाजोलिन. सो इसमें पेंटोलामाइन एंड और एक ड्रग बोला था मैंने, कौन सा, टोलेजोलिन. पेंटोलामाइन एंड टोलेजोलिन, ये आर द इमिडाजोलिन डेरिवेटिव. देन मिसलेनियस में आएगा क्लोरप्रोमाजिन. क्लोरप्रोमाजिन एंटी हिस्टामिक भी होता है, क्लोरप्रोमाजिन एंटी साइकोटिक भी होता है, क्लोरप्रोमाजिन अल्फा को भी ब्लॉक करता है, क्लोरप्रोमाजिन एंटी इमिटिक भी होता है ना. सो क्लोरप्रोमाजिन लोकल एनेस्थेटिक भी होता है ना. क्लोरप्रोमाजिन क्या है, खतरनाक वाला ड्रग है. कौन है, खतरनाक वाला ड्रग. दैट्स व्हाई उसको क्या है, बहुत सारे एक्शंस हैं. सो क्लोरप्रोमाजिन हैज अ न्यूमरस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. दैट्स व्हाई क्लोरप्रोमाजिन इज नोन एज अ लार्ज एक्टिल. ऑलरेडी मैंने ये बोला था व्हेन आई वाज डिस्कसिंग एंटीसाइकोटिक ड्रग्स. सो क्लोरप्रोमाजिन इज नोन एज अ लार्ज एक्टिल. देन ओके, ये हो गए नॉन सिलेक्टिव है ना. ये नॉन सिलेक्टिव. अभी क्या है, सिलेक्टिव. सिलेक्टिव कौन सा होता है, अल्फा को सिलेक्टिव हो सकता है. तो उसमें आएगा प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, अल्पोजोसिन, टैमसोलोसिन. तो इसमें से है सिन है, सिन. जोसिन वाले सब क्या है ना, जोसिन एंड लोसिन. जोसिन लोसिन क्या है, सब सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर. प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, अल्पोजोसिन, ओके, अल्पोजोसिन एंड टैमसोलोसिन. Tamsulosin is drug of choice in benign post hyperplasia. Prazosin is a drug of choice in scorpion sting. ठीक है, अल्फा 2 सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर योहिम्बिन. ठीक है, और एक बार क्लासिफिकेशन देख लो. क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. नॉन कॉम्पिटिटिव अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा हाइड्रोअल्कोमाइन, फिनॉक्सीबेंजामाइन. कॉम्पिटिटिव और इक्विलिब्रियम टाइप ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स, इसमें तीन टाइप होता है. नॉन सिलेक्टिव, तो नॉन सिलेक्टिव में अर्गोट अल्कोलॉइड्स. तो अर्गोट अल्कोलॉइड्स में दो है, सिंपली अर्गोट अल्कोलॉइड्स, अर्गोमेट्रिन, अर्गोडोक्सिन, एंड हाइड्रोजनेटेड अर्गोट अल्कोलॉइड्स. उसमें डीहाइड्रो टर्म डालो, डायहाइड्रो, डायहाइड्रो अर्गोटामाइन, डायहाइड्रो अर्गोडोक्सिन. इमिडाजोलिन डेरिवेटिव पेंटोलामाइन एंड टोलेजोलिन आएगा, पेंटोलामाइन एंड टोलेजोलिन. मिसलेनियस में आएगा आपका क्लोरप्रोमाजिन. सिलेक्टिव में आएगा जोसिन एंड लोसिन. जोसिन कौन, पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, अल्पोजोसिन, टैमसोलोसिन. और अल्फा 2 में आएगा योहिम्बिन. सो आई होप एड्रेनर्जिक अल्फा ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आएगा. यस और नो, विल सी इंडिविजुअल ड्रग. बीटा ब्लॉकर्स का अपन बाद में देखेंगे, पहले अल्फा ब्लॉकर्स. पहला है डायबेनामाइन एंड फिनॉक्सीबेंजामाइन. तो इसके डिस्कस कर लेते हैं इसको, क्या है ये. डायबेनामाइन एंड फिनॉक्सीबेंजामाइन, they are the non-competitive blockers. Non-competitive, they are the blocker of non-competitive blocker of alpha receptor. Phenoxybenzamine is a 6 to 10 times more
active than dibenamine in this perspective, is in the blocking action. So phenoxybenzamine is 6 to 10 times more active as a alpha receptor blocker. Phenoxybenzamine is irreversible antagonist of alpha and alpha 1 and alpha 2. That's why it is non-selective. Non-selective होता है. Use of this drug before administration of adrenaline can result in the Dale's vasomotor reversal. नॉन सेलेक्टिव है इसके लिए, दैट्स व्हाई डेल्स vasomotor reversal कराता है. नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर है नहीं. तो जैसे डेल्स vasomotor reversal में क्या होता है, सो इफ यू गिव्स adrenaline before adrenaline, if you inject ergot alkaloids, what will happen? So the pressure response of adrenaline result in the depressor response known as a Dale's vasomotor reversal. So likewise that alpha blockers होता है ये phenoxybenzamine, it also causes this Dale's vasomotor reversal. Phenoxybenzamine क्या है भाई? It is a prodrug. ये prodrug converted into active metabolite. तो active metabolite कौन है? इथेलीन है ना, इथिलीन इमोनियम by the process of cyclation. इथिलीन इमोनियम उसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है by the process of cyclation. They can prevent arrhythmia, but they cannot reverse the arrhythmia. Arrhythmia prevent कर सकते. They are used in the prophylaxis of anemia. Prophylaxis of arrhythmia, but they cannot reverse the arrhythmia. So it is not a drug for treatment. It is drug for prophylaxis of arrhythmia. They have a non-specific alpha blocker and also antagonizes the acetylcholine, histamine and serotonin. एडवर्स रिएक्शन क्या है इसके? तो दोनों ड्रग सिमिलर हैं, सिमिलर एक्शन. एडवर्स रिएक्शन देखो, ड्यू टू एंटागोनाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिलकोलिन. एसिटिलकोलिन को ब्लॉक करता है तो क्या करेगा? ड्राइनेस ऑफ माउथ करेगा, जैसे मैंने बोला. हिस्टामाइन को अगर हिस्टामाइन को ब्लॉक करेगा, सेरोटोनिन को ब्लॉक करेगा, इट इज इन द मायोसिस, ड्राइनेस ऑफ माउथ, nasal stiffness, inhibition of ejaculation, palpitation, postural hypotension, nausea and vomiting. These are the adverse effects of this phenoxybenzamine. Next we will see dehydrogenated alkaloids. Sorry, dehydrogenated ergot alkaloids. उसमें क्या है? Dihydro ergotamine and dihydroergotoxin. They are used to treat the orthostatic hypotension. Orthostatic hypotension. ये क्या होता है orthostatic hypotension? Anybody know what do you mean by orthostatic hypotension? Orthostatic hypotension. Suppose I am teaching you, I am sitting in front of you. Okay, somebody, if I am on my feet, अगर मैं खड़ा हूँ स्टैंडिंग पोजिशन पे, तो मेरा एक पर्टिकुलर ब्लड प्रेशर रहेगा. अगर मैं बैठ गया, मेरा ब्लड प्रेशर उतना ही रहना चाहिए, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होना चाहिए. अगर मैं लेट गया तो उसका भी ब्लड प्रेशर उतना टाइम पे भी सेम होना चाहिए. बट orthostatic hypotension means what? So change in the blood pressure or hypotension due to change in the position known as orthostatic hypotension. Hypotension because of the change in the position known as hypotension. Okay, so used to treat orthostatic hypotension due to autonomic neuropathy. Autonomic nerves का अगर कोई autonomic neuropathy, they reduces the sympathetic tone by depression of vasomotor center. They induces the bradycardia by its vagal stimulation, direct myocardial depression, and can stimulate the chemoreceptor trigger zone. अल्फा ब्लॉकर, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है ना, तो प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, अल्फोजोसिन and tamsulosin. So all they are nothing but the selective alpha 1 blocker. That's why selective alpha 1 blockers. Okay. So details of this drug we'll see in the antihypertensive chapter. But they are used to decrease the blood pressure and used in the treatment of benign prostate hyperplasia, hypertrophy. Particularly this tamsulosin. So it is a drug of choice in the benign prostate hyperplasia. पहले ये भी था प्राजोसिन, बट उसके बाद में ये tamsulosin का क्या है, इसका इसको इसका आविष्कार हो गया. Tamsulosin was found after the prazosin. So tamsulosin is a more selective for alpha receptor present in the prostate gland, alpha 1b. They have favorable effect on lipid profile. They increases the high density protein, decreases the low density protein and triglyceride. Tamsulosin and psilocybin,
they act selectively for the prosthetic alpha 1a. Alpha 1a. So they specifically block the alpha 1a receptor present in the prosthetic gland. Therefore, used in the benign prostatic hyperplasia (BPH). उनका adverse effect होता है. They can cause floppy iris syndrome during the cataract surgery. Floppy iris syndrome. एक याद रखो. उनका adverse effect. Tolazolin and pentolamine. क्या है ये सब imidazolin derivative है. In addition to alpha blocking activity, they can cause increase in the force of myocardial contraction and can produce tachycardia. Tolazolin it is a partial alpha 1 agonist. Therapeutic use of alpha adrenergic blocker. इसका use क्या होगा? use क्या होगा? Hypertension and pheochromocytoma. Pheochromocytoma, hypertension. Pheochromocytoma means क्या है? So if there is a cancer of your prostate gland, as a pheochromocytoma, there is increased catecholaminergic release. That's why. क्योंकि जो adrenal gland होता है, cancer of adrenal gland, pheochromocytoma. So due to adrenal gland cancer, वहाँ पे क्या होता है? Release of more adrenaline, peripheral vascular disease and benign prostatic hyperplasia, erectile dysfunction in the males. Treatment of scorpion sting. बिच्छू लड़ गए रे, मेरे पीछे पड़ गए रे. स्कॉर्पियन स्टिंग में. बीटा ब्लॉकर्स, ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है. ओके, सो बीटा ब्लॉकर्स, बीटा adrenergic blocking drugs. So all they are used in the treatment of hypertension. Some of them are used in the treatment of angina pectoris, congestive cardiac failure. सब में ये यूज होंगे. सो बीटा ब्लॉकर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना है इसके ऊपर. So you know that there are three receptors: beta 1, beta 2, beta 3. Beta 3 is present in the adipose tissue, responsible for the lipolysis. ठीक है, तो उसके ऊपर कार्डियक एक्शन नहीं होगा. So beta blockers mostly they are known for their cardiac action. So action on heart. So in that only we are going to discuss about beta 1 and beta 2 receptor. Beta 3 receptor we have kept aside. देखो selective, non-selective. Those drug which blocks the only beta 1 receptor, they are known as cardioselective beta blocker, also known as a second generation beta blockers. कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं ना, उनको अपन बोलते हैं सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स. नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं ना, ओके, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स particularly first category, they are known as a first generation beta blockers. Okay, and these ये जो है ना, इनको बोलेंगे अपन थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी. They are known as a third generation. यहीं पे क्लियर करना, बाकी नीचे भी दिया है लेकिन अपन पहले यही पे देखेंगे. So non selective beta blocker, they will block beta 1 receptor as well as beta 2 receptor. तो बेटी यहाँ पे याद रखना है कि बीटा 1 रिसेप्टर का रोल क्या होता है, बीटा 2 का रिसेप्टर का रोल क्या होता है. क्या रोल है बीटा 1 का रिसेप्टर का रोल? सो बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेशन of beta 1 receptor by noradrenaline in the heart will increase the heart rate and force of contraction, ultimately will increase the cardiac output and blood pressure. So in hypertensive patient there is a increased, okay, in hypertensive patient there is a increased sympathetic outflow, so you have to block it. Okay, so non selective they will block alpha as well as they will block the beta 1 as well as beta 2. beta 2 कहाँ पे होता है? beta 2 होता है आपके लंग्स के स्मूथ, बीटा 2 होता है आपके ब्रोंकियल स्मूथ मसल में. सो बीटा 1 होता है आपके हार्ट में एंड किडनी में. बीटा 2 कहाँ पे होता है? बीटा 2 होता है आपके स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकिया. बीटा 1 हार्ट एंड किडनी. नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, दे आर यूज्ड इन द नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, दे विल ब्लॉक बीटा 1 एज वेल एज बीटा 2. ठीक है, अगर आपको ब्लड प्रेशर के इशू के लिए आपको बीटा ब्लॉकर यूज करना है, एंड इफ यू आर यूजिंग नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, नॉन सेलेक्टिव वाले मतलब क्या, ये बीटा को 1 को ब्लॉक करेंगे, बीटा 2 को ब्लॉक करेंगे. बीटा 1 को तो ब्लॉक किया तो दैट इज अ डिजायरेबल, क्योंकि आपको हाइपरटेंशन है, आपको तो नॉर्मल करना है ब्लड प्रेशर. बीटा रिसेप्टर 1 ब्लॉक किया तो इट्स ओके, बट साथ साथ बीटा रिसेप्टर 2 को भी ब्लॉक करो. सो व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर? बीटा 2 रिसेप्टर का रोल क्या होता है? सो इट इज as I told you, beta 1 is a stimulatory in nature, beta 2 is a inhibitory in nature.
सो बीटा 2 इनहिबिटरी होता है एंड व्हाट इट डू, बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन कॉजेज द ब्रोंकोडाइलेशन, ब्रोंकोडाइलेशन के लिए बीटा 2 रिसेप्टर रिस्पांसिबल है. So adrenaline noradrenaline will act on a beta 2 receptor as agonist will stimulate the beta 2 receptor and cause bronchodilation. Suppose that you are taking this any drug like propranolol for blood pressure. So if you are taking propranolol for blood pressure, what happens? As propranolol is a non-selective beta blocker, so it will block beta 1, which is a desired in case of hypertension. As it is non-selective, it also block the beta 2. So what happens after beta 2 blockage? It will cause bronchoconstriction. Normally क्या करता है, bronchodilation करता है ना बीटा 2 रिसेप्टर. एगोनिस्ट करेगा ब्रोंकोडाइलेशन, एंटागोनिस्ट करेगा ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन. ये क्या है, नॉन सेलेक्टिव बीटा एंटागोनिस्ट है. ये बीटा 1 को भी एंटागोनिज्म करता है, बीटा 2 को भी करता है. बीटा 1 का ब्लॉकिंग एंटागोनिज्म is desired in case of hypertension, but beta 2 actions that is undesired, and that's why propranolol will cause asthma. It will increase the asthma, it will aggravate the asthma due to beta 2 blocking activity. So that's why propranolol is contraindicated in the asthmatic patient. Are you getting or not? So now non-selective beta blockers, they will block beta 1 as well as beta 2. So in that also you have three classes. Non-selective में भी क्या है, तीन क्लास होता है. कौन सा तीन क्लास है? फर्स्ट, बीटा ब्लॉकर्स विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी. इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी मतलब क्या है? बीटा ब्लॉकर विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी. इसमें आएगा मतलब बीटा ब्लॉकर्स विद सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी नहीं है उसमें बीटा ब्लॉकर्स. एग्जांपल है प्रोप्रानोल, सोटेनोल, टिमोलोल, है ना. टीपीएस, पीएसटी, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हो. टीपीएस, पीएसटी, है ना. टीपीएस, पीएसटी. टीपीएस मतलब क्या है? टीपीएस नाम का एक डिप्लोमा फार्मेसी में एक गाइड्स आते थे डिप्लोमा के बच्चों को, वो टीपीएस एज अ देख सकते हो, वो टीपीएस. पीएसटी ऐसा कुछ रखो, प्रोप्रानोल, सोटेनोल, टिमोलोल. Then they are the without intrinsic activity. Next is a drug beta blockers with the intrinsic sympathomimetic activity. ये कौन? पिंडोलॉल. पिंडोलॉल इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी, पिंडोलॉल. तो पिंडोलॉल में देखो यहाँ पे कौन सा रिंग होगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक, इसमें होता है इंडोल रिंग. अपन बाद में देख लेंगे वो सब. बस यहाँ पे इतना रखो, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विदाउट intrinsic sympathomimetic activity, propranolol, timolol, sotalol, PST, TPS, with sympathomimetic activity, pindolol, and with additional alpha blocking activity. ये तो बीटा ब्लॉकर है, बट अल्फा को भी एडिशनली ब्लॉक करता है. कौन है? लेपेटेलोल, कार्बिडायोल, and that's why they are also considered as a third generation beta blockers. बाद में देखेंगे. Now cardio selective beta blockers. कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत बार आ चुके हैं कि व्हिच ड्रग इज अ कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, है ना. तो याद रखना है आपको, एक का इस मतलब क्या, एक का एसिटोब्यूटेरॉल इज अ कार्डियो सिलेक्टिव. देन अटेनोलोल, अटेनोलोल इज अ कार्डियो सिलेक्टिव. मेटोप्रोलोल कार्डियो सिलेक्टिव. बिसोप्रोलोल, इस्मोलोल, बिटॉक्सोलोल, सिलिप्रोलोल एंड नेबियोलोल, these are the कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स. तो देखो जीपैट 2022 क्वेश्चन आ चुका है. द प्रोटोटाइप ऑफ कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, उसका आंसर है मेटोप्रोलोल. सो इट इज द फर्स्ट ड्रग. प्रोटोटाइप कौन है? मेटोप्रोलोल. मेटोप्रोलोल इज द प्रोटोटाइप ऑफ कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. इसके बाद में बाकी ड्रग बने, एटेनोलोल, एसिटोब्यूटेरॉल, देन बिसोप्रोलोल, इस्मोलोल, बिटॉक्सोलोल, सिलिप्रोलोल एंड नेबियोलोल. So these are the cardioselective beta blocker. So cardioselective beta blocker मतलब क्या है? They only block the beta 1 receptor present in the heart. That's why cardioselective beta blocker. Next होता है आपका classification of beta blocker according to the generation. Generation के basis पे उसका classification देख लेंगे. First generation, second generation, third generation. So beta blockers, beta adrenergic blockers drugs according to the generation. फर्स्ट जनरेशन कौन सा है? फर्स्ट जनरेशन दे आर नोन एज ओल्डर ड्रग्स और नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, ये वाले. सो प्रोप्रानोल, टिमोलोल, सोटेलोल, पिंडोलोल, ये चार ड्रग आएंगे उसमें. वही है प्रोप्रानोल, टिमोलोल, सोटेलोल, पिंडोलोल. बाद में सेकंड जनरेशन
बीटा ब्लॉकर, उसमें सब आएंगे बीटा 1 ब्लॉकर और कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, वो इसमें ये आएंगे सब इसके ऊपर। सो मेटोप्रोल, अटेनोल, एसिटोब्यूटालॉल, बिसोप्रोल, इस्मोलॉल। थर्ड जनरेशन वाले जो है ना, थर्ड जनरेशन, इसमें कौन से आएंगे, ये दो और ये देखो, लैबेटालॉल, कार्वेडाइलॉल, सेलिप्रोलॉल, नेबियोलॉल है ना, एंड बिटॉक्सोलॉल, मतलब इसके ऊपर क्या है, ये जो है वो सेकंड जनरेशन, इसके ये तीन प्लस ये दो, ये क्या है, थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन उसी टाइप में आता है, फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर इज कंसिडर्ड एज अ कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, याद रखना है। यहाँ पे एक ये ट्रिक वगैरह बना सकते हो, ये देखो MAABE, इसमें क्या लगते हो, इसमें लग सकता है आपका मेबा, लगा सकते हो मेबा ना, मेबा, MEBE ऐसा लगा सकते हो, या फिर ई है ना, माँ लगा सकते हो, MAA माँ, बेमा है ना, बेमा, ऐसा कुछ लगा के अब याद रखो। थर्ड जनरेशन में आता है अल्फा ब्लॉकिंग विद एडिशनल वैसोडाइलेटर प्रॉपर्टी और अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। तो देखो नेबी होलाल जो है ना, इट इज हैविंग वैसोडाइलेटर प्रॉपर्टी, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। सो बीटा ब्लॉकर विद एडिशनल वैसोडाइलेटर प्रॉपर्टी कौन है, नेबी होलाल, बिकॉज ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है, नाइट्रिक वैसोडाइलेटर। देन अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी वाला कौन है, ये लेबेडोलॉल, कार्बेडाइल। सो बीटा ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन समझ में आया आपको, ये और नो, क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगेन बीटा ब्लॉकिंग एजेंट, बीटा ब्लॉकर्स, मैकेनिज्म क्या रहेगा उनका, दे these are the drug which blocks the actions of noradrenaline, adrenaline, dopamine competitively and they selectively acting on a beta receptor। बीटा में भी दो टाइप है, तो उसमें भी सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव आएगा, बट ये अल्फा को हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, बीटा ब्लॉकर है। बीटा में भी सब टाइप है ना, by inhibiting the activity of cell membrane enzyme adenyl cyclase which decreases the production of cyclic AMP। नाउ इसमें कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर और सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर आपने देखा है, एस्टोब्यूटालॉल, एटेनोल, मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, इस्मोलॉल। इस्मोलॉल में क्या है, आल्सो एज इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक, इसमें पिंडोलॉल भी आता है, पिंडोलॉल, इस्मोलॉल। देन नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स व्हिच ब्लॉक्स बीटा 1 एज वेल एज बीटा 2, उसमें आता है फर्स्ट बीटा ब्लॉकर्स विद मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, तो इसमें एग्जांपल है प्रोप्रानोल, ये अलग क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा अलग है, देखो या तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, बीटा ब्लॉकर विद द मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, इसका एग्जांपल है प्रोप्रानोल। इसका भी क्या है, इसका भी आइसोमर, इट इज आल्सो आइसोमर, इट इज आल्सो रेसमिक रिएक्शन। देन बीटा ब्लॉकर विद मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी प्लस इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी में ऑक्सीप्रेनॉल एंड पिंडोलॉल, इस्मोलॉल भी है। सी बीटा ब्लॉक, selective beta blockers without membrane stabilizing action and intrinsic sympathomimetic activity, उसमें आएगा टिमोलॉल एंड नोडालॉल। मिसलेनियस में आता है सोटेलॉल, और उसमें और एक क्लास डाल सकते हो, बीटा ब्लॉकर विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी, सिलिप्रोलॉल एंड, है ना, सिलिप्रोलॉल, इसमें क्या है, कार्बेडाइलॉल एंड नोडालॉल, वो एक डाल सकते हो एडिशनल। थर्ड क्लास कौन होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, एग्जांपल है इसमें लेबेडालॉल, कार्बेडाइलॉल, सिलिप्रोल। देखो फर्स्ट जनरेशन कार्डियो सिलेक्टिव बीटा का है, कार्डियो, तो अलग अलग मतलब दिया है क्लासिफिकेशन। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स दे आर नोन एज सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन वाले कौन है, फर्स्ट जनरेशन नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, उसमें दो चार टाइप आता है ना, हर एक बुक में अलग अलग दिया है क्लासिफिकेशन। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, प्रोप्रानोल, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर प्लस इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, पिंडोलॉल एंड ऑक्सीप्रेनोल। So cardioselective beta blocker without above action, timolol, nodelol. Miscellaneous में sotalol and beta blocker with additional alpha blocking property known as the third generation. इसमें एग्जांपल आएगा लेबेडोलॉल, कार्बेडाइलॉल, सिलिप्रोल। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम क्लासिफिकेशन अपन लेने वाले। देन विल सी ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ बीटा ब्लॉकर, डिटेल में अपन उस टाइम पे भी देखने वाले हैं, बट यहाँ पे
First one is a membrane stabilizer. Membrane stabilizer. Pharmacological action of beta blocker. So propranolol and other beta blockers have variable direct depression effect on heart. मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर मतलब क्या है? मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करेंगे, ना आयंस को अंदर जाने देंगे ना बाहर जाने देंगे. तो आयन चैनल होते हैं मेम्ब्रेन में, इसको ब्लॉक करेंगे. So membrane stabilizer. So membrane stabilizing action is also with the local anesthetic. Local anesthetic drug जो होते हैं उसमें भी membrane stabilizing action होता है. Intrinsic sympathomimetic action है ना, बाकी सबका कॉमन देख रहे हैं अपनी ये फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ बीटा ब्लॉकर है ना, by considering the or by taking propranolol as a prototype. Some beta blockers and some beta blockers also has a beta stimulant activity because of the partial agonistic activity. That's why they are known as intrinsic sympathomimetic activity. Beta blockers with the intrinsic sympathomimetic activity, which is partial agonist होती है. Primary beta blocking action of these drugs in fact most responsible for the beneficial effect as well as adverse effect on central nervous system. Due to lipid solubility of this drug, they can cross blood-brain barrier and cause CNS adverse effect. So what are these? They are nothing but the mood alteration, anxiety state, particularly with the propranolol. Atenolol जो होता है cardiosolitic होता है and it has a least lipid solubility. That's why it will not have any CNS symptoms. CNS symptoms नहीं रहेंगे. Effect of beta blocker. Due to beta blocking effect in presence of increased sympathetic tone, अगर sympathetic activity बढ़ गया है तो उस टाइम में क्या करेंगे, हार्ट में, दिल में, they reduces the automaticity and decreases the heart rate. हार्ट रेट कम करेंगे, जो automaticity बढ़ा है उसका हार्ट का वो कम करेंगे, reduces the myocardial contractility. मायोकार्डियल का contraction force जो है वो कम करेंगे and cardiac output and stroke volume is also decreased. They will decrease or they will slow down the AV conduction. Atrioventricular जो conduction होता है उसको भी slow करेंगे. They reduces the myocardial oxygen consumption and increases the exercise tolerance in case of myocardial infarction and in case of angina. They reduces the blood pressure by their direct action on heart and reduces the cardiac output. And once your cardiac output is decreased, the blood pressure will decrease and lowers the plasma renin. Plasma renin कैसे कम करेंगे? प्लाज्मा रेनिन कैसे कम करेंगे, है ना, कैसे करते हैं कम भाई प्लाज्मा रेनिन? बिकॉज बीटा 1 स्टिमुलेशन इन द हार्ट इंक्रीज द हार्ट रेट, बीटा 1 स्टिमुलेशन इन द किडनी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ रेनिन. सो रेनिन का भी प्लाज्मा लेवल. सो देखो आपको क्वेश्चन कभी कभी आता है कि फॉलोइंग ड्रग्स आर द रेनिन एंटागोनिस्ट. आपको पता होता है कि आपने क्लासेस पढ़ लिया है, क्लासेस रट लिया है ना, क्लासेस वाले ने बोला है आपको कि है ना रेनिन एंटागोनिस्ट कौन है, कैलिगारेन एंड ऑल दैट. वहाँ पे नाम भी याद नहीं आ रहा, वो 2-3 ड्रग होते हैं. लेकिन बीटा ब्लॉकर आप भूल जाते हो. बीटा ब्लॉकर्स दे आर आल्सो रेनिन एंटागोनिस्ट. उस टाइम पे मैं बोलूंगा आपको ब्लड प्रेशर जब. ओके. Selective beta blockers act on only on heart and non-selective beta blockers act additionally on bronchi. That's why they causes the ARB resistance and that could be dangerous in the patient with asthma, particularly propranolol because that is a non-selective beta blocker. Metabolic effect क्या है इसकी? They are capable of altering and modifying carbohydrate lipid metabolism. They also increase the natriuretic peptide, atrial natriuretic peptide. एट्रियम में एक पेप्टाइड रिलीज होता है, उसको बोलते हैं एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड. वो जब आईज में क्या एक्शन है इसके, आईज में इंट्राओकुलर प्रेशर के ऊपर. सो दे कैन रिड्यूस द इंट्राओकुलर प्रेशर व्हेन यूज्ड लोकली इन द फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप. रिडक्शन इन द सिक्रेशन ऑफ एक्वियस ह्यूमर. जो ग्लाउकोमा होता है, ग्लाउकोमा, इन द ग्लाउकोमा में there is increased formation of aqueous humor and there is a decreased secretion, decreased excretion or outflow of aqueous humor. तो आपके आई बॉल में एक्वेस ह्यूमर बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? एक तो प्रोडक्शन बढ़ गया है, प्रोडक्शन बढ़ा है, प्रोडक्शन के लिए बीटा रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं. टिमोलॉल पर्टिकुलरली
ऑल्सो अल्फा अल्फा रिसेप्टर जो होता है वो वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है एक्वियस ह्यूमर को बाहर निकालने। एक तो प्रोडक्शन कम करो या फिर उसका एक्सक्रीशन ज्यादा करो। ग्लाइकोमा में क्या होता है, इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है और एक्सक्रीशन कम हो जाता है, ताकि वो इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोमा। दे कैन रिड्यूस द इंट्राऑकुलर प्रेशर व्हेन यूज्ड locally। रिडक्शन इन द सिक्रेशन ऑफ एक्वियस ह्यूमर, तो एक्वियस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम करते हैं। Absorption, distribution, metabolism, elimination. So propranolol, metoprolol, they are metabolized by liver. Propranolol will undergo first phosphate. उसका एक एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में। द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्रोप्रानोल 4 हाइड्रोक्सी प्रोप्रानोल। तो क्या होगा, प्रोप्रानोल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोप्रानोल 4 हाइड्रोक्सी प्रोप्रानोल इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्रोप्रानोल। एडवर्सिटी है, कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी है ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ कार्डियक एक्शन, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सीवियर एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। सडन हाइपरटेंशन भी हो सकता है, प्रोनाउंस्ड ब्रैडिकार्डिया विद द प्रोप्रानोल, है ना। प्रोप्रानोल में हार्ट रेट कम करता है। इन एग्रीवेशन ऑफ एवी कंडक्टेंस डिफेक्ट ड्यू टू मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, इट कैन डायरेक्टली डिप्रेस द डैमेज्ड हार्ट लीडिंग टू मायोकार्डियल फेलियर। एक्सेसिव ब्रैडिकार्डिया करेगा, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, हाथ पैर ठंडा कर देगा आपका। absence ऑफ पल्स, पल्स को बंद कर देगा। रेनॉल्ड्स फिनोमेना भी करेगा। मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या है एडवर्स इफेक्ट, सो न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया बिकॉज ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करेक्शन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। बीटा ब्लॉकर्स में बी यूज्ड सेफली इन पेशेंट विद नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus। तो ये क्या करता है, बीटा ब्लॉकर्स है, बीटा रिसेप्टर जो होता है, तो बीटा ब्लॉकर से तो बीटा रिसेप्टर आल्सो प्रेजेंट इन द पैंक्रिया। व्हाट इज द रोल, टू रिलीज द, है ना, टू रिलीज द इंसुलिन। तो ये क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स उसको भी ब्लॉक करते हैं नॉन सेलेक्टिवली, एंड क्या करेंगे, इंसुलिन का इनिबिशन ऑफ इंसुलिन रिलीज का काम होता है बीटा बीटा रिसेप्टर का। बीटा रिसेप्टर जो होता है इज इनहिबिटरी इन नेचर, इट विल प्रिवेंट द इंसुलिन रिलीज, राइट। सो बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, सॉरी अल्फा रिसेप्टर करता है इनहिबिट, बीटा करता है प्रमोट, है ना। बीटा रिसेप्टर विल प्रमोट द इंसुलिन रिलीज, so they will block, they will prevent the insulin release, so they increase the, oh, they are not stable in the diabetes, okay, so they are only used in the insulin non insulin dependent diabetes mellitus। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, ओके, उसमें इंसुलिन का रिलीज भी ये करते कम कर देते, दैट्स व्हाई दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। देन अगेन what is effect on respiratory system, so non-selective beta blockers they can cause bronchospasm, okay, in patient with asthma। CNS के ऊपर क्या करते हैं, due to prolonged use of propranolol they can cause fatigue, muscle cramp and rarely mental depression। these are the effect of propranolol। therapeutic uses, उसका यूज क्या है, so due to its cardioselective beta blocking action they are used in the angina pectoris, myocardial infarction, then cardiac arrhythmia, hypertension, congestive cardiac failure, cardiomyopathy, hypertrophic obstructive cardiomyopathy, pheochromocytoma। These are the uses due to beta blocking effect। Non-cardiovascular uses, ये तो हो गए cardiovascular use। They are used in the chronic open angle glaucoma, thyrotoxicosis, मतलब increase the thyroid hormones, portal hypertension, मतलब portal circulation जो होता है उसमें hypertension, to control the withdrawal symptoms of alcohol addict। Propranolol is useful in the prevention of migraine and treatment of essential tremors। ये उसकी यूज है। अदर बीटा ब्लॉकर्स, अदर कौन से बीटा ब्लॉकर्स देखो, सोटालॉल है ना, is a non-selective beta blocker with the additional potassium channel blocking, it is a class 3 antiarrhythmic property। timolol क्या है, it is used in the eyes topically for eyes। metoprolol क्या है, prototype of cardioselective beta 1 blocker। इसका स्ट्रक्चर भी पूछा है मर्जी। bisoprolol is a highly selective cardioselective beta blocker, may be oral highly cardioselective beta blocker along with the vasodilation property due to release of nitric oxide। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार। स्मॉलॉल अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा 1 ब्लॉकर, सिलेप्रोलॉल सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विद एडिशनल बीटा 2 एगोनिस्टिक एक्टिविटी, ये अच्छा है। तो दैट्स व्हाई अब अभी देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आपको,
सिलिप्रोल क्या है? बीटा ब्लॉकर विद एडिशनल बीटा 2 क्या है? एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी। मतलब ये सिलिप्रोल क्या करता है देखो, by blocking the beta 1 receptor in the heart, it decreases the blood pressure. It is a beneficial, and also it is a beta 2 agonist. Agonist मतलब क्या? ये bronchodilation करेगा. So instead of using propranolol in the asthmatic hypertensive patient, you have to use celiprolol. ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. So as propranolol is contraindicated in case of asthmatic patient to treat the hypertension, so following drug is suitable. ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे. Celiprolol is suitable. Labetalol, it is the first synthetic drug capable of blocking alpha as well as beta receptor. And labetalol के they four diastereomers. There are four diastereomers of labetalol. Third generation beta blockers है ना. मैंने बोला क्वेश्चन आता है तो अल्फा ब्लॉकर प्लस बीटा ब्लॉकर. ये क्या है? बीटा ब्लॉकर्स. बीटा तो ब्लॉक करेंगे. इन एडिशन टू दैट बीटा ब्लॉकर्स विद द अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी कौन है देखो, labetalol, carvedilol, medroxalol, and bucindol, bucindol, BMLC, BMLC, B for bucindol, M for medroxalol, C for carvedilol, and L for labetalol. Okay, BMLC, BMLC. So beta blockers with additional alpha blocking, beta blockers with vasodilator property. नेबीपोलर क्वेश्चन इसके ऊपर ऑलरेडी आ चुका है. बीटा ब्लॉकर विद पोटेशियम चैनल ओपनिंग प्रॉपर्टी, ये नया वाला है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. टिलिसोलॉल, टिलिसोलॉल, टिलिसोलॉल इज बीटा ब्लॉकर प्लस पोटेशियम चैनल ओपनिंग. बीटा ब्लॉकर विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एक्टिविटी, कार्बिडायलॉल, विवेंटोलॉल, बिटाक्सोलॉल. बाद में आपको देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट लगाना है. बीटा 2 एगोनिस्ट मतलब बीटा ब्लॉकर विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमोटिक एक्टिविटी. इसमें आएगा सिलिप्रोलोल, कार्टिकोलोल एंड बुपिनिंडोल. यस, आर यू गेटिंग और नॉट? समझ रहे हैं आपको?